Hey there. इस लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को टच करेंगे दैट इज़ द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट बेसिकली. इट्स नॉट द एग्जैक्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के फिजिकली मेमोरी में कैसे स्टोर होती है बट द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ लिस्ट्स लाइक उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू. ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा कि लिस्ट अंडर द हुड कैसे काम करती हैं तो देन यू विल रन इनटू बग्स विच आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड टू फिक्स. So this is an extremely important lesson, or make sure that you pay proper attention. So today we are going to talk about aliasing and cloning. और जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को आपको कहीं ना कहीं कॉपी करना होता है, and these things you need to keep in mind. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि we have got a list which is a bunch of numbers, and now we have basically assigned a new label to the same list. So अब इस लिस्ट में अगर आप देखें there is an object in memory and there are two pointers, two names to the same object. अगर आप एक नाम से एक्सेस करेंगे तो it's going to be the same object अगर आप दूसरे से भी एक्सेस करेंगे, दोनों क्योंकि एक ही को पॉइंट कर रहे हैं. अब फिर इशू यहाँ पे कहाँ पे होता है? बिकॉज नाउ इफ यू चेंज वन list, L new for example, the other one is going to change because both of these are pointing to the same list. Or if you don't believe, you can just write this code and check this out in Python tutor. Pause this video and do it and then come back. So L new equals to L original. It does not create a copy. It just creates an alternate, another different name for the same thing. So एक ही बोतल के ऊपर दो लेबल चिपका देगा. That's for the list you have to keep in mind. In fact, for any mutable object you have to keep this in mind. But how do we create copies? So as we have already seen that the assignment, that's not going to create a copy. To create a copy you can do it three ways. So number one, you can use slicing. So जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं, string slicing is always going to give you a new list. It's not going to mutate the existing one. This list function, इसके parameter में आप कोई भी iterable दो, iterable meaning के either you can give a range or you can give an existing list or you can give even a tuple. So it's going to create a new list from that and then it's going to give you the new list copy. It's not going to mutate the existing, but it's going to create a new copy. And similarly, dot copy, इससे भी आपके list की copy बना के it's going to return. So this is an example of how it creates a copy. So for example, you have an original list which has 4, 5, 6 and its ID is 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ पे mentioned है. Now when you create a copy using slicing, it's going to create a completely new object in the memory with a different ID. Then it's going to copy all the data and then it's going to assign the label to this data. So this is something called a shallow copy. इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली शेडो कॉपी, बट दिस इज कॉपिंग. इसका मतलब है कि जब आप एल न्यू को चेंज करेंगे इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एल ओरिजिनल लिस्ट. न्यू लिस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओरिजिनल लिस्ट. दैट्स द मेन डिस्टिंक्शन. सो यू कैन नॉट सिंपली यूज असाइनमेंट ऑपरेटर विद these mutable objects such as lists. Here is a shallow copy example. Let me actually hide my face here in this case. I'll be back. So यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक ओरिजिनल लिस्ट मेंटेन की हुई है और उसकी हमने एग्जैक्ट कॉपी बनाई और उसके बाद हमने न्यू लिस्ट जो हमने कॉपी बनाई थी उसका शुरू वाला पहला एलिमेंट हमने चेंज कर दिया. लेकिन जब हमने प्रिंट किया तो सिर्फ न्यू लिस्ट का एलिमेंट ही चेंज हुआ है और पुरानी लिस्ट इट्स स्टिल प्रिजर्व्ड. दिस स्लाइसिंग इज गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी, नॉट an alias. Alias means the same name to the different name to the same object. Alias again you can think of it as an alternative name. So this is not an alias. जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी assignment वाली, this is an alias. So L new is an alias of L original here. So let's try this function. You have to write a function which basically removes all of the objects, all of the given copies of objects from a list. So यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है और उसमें से आपने गिवन ई आपने रिमूव करना है. ई कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी एनीथिंग. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिस्ट 1 2 3 1 2 2 2. उसमें अगर 2 आपको दिया हुआ रिमूव करने के लिए, तो यू हैव टू रिमूव ऑल 2s फ्रॉम दिस लिस्ट, नॉट जस्ट 1.
और इसमें आपने बेसिकली इसका ख्याल रखना है कि यू हैव टू म्यूटेट द लिस्ट. म्यूटेट का मतलब है कि जो आपको लिस्ट दी हुई है, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, दिस हैज टू चेंज, दिस विल बी पास्ड एज अ पैरामीटर एंड यू हैव टू चेंज दैट इनसाइड द फंक्शन. तो जब बाहर आके हम इस ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, इट शुड प्रिंट द अपडेटेड वर्जन. यू कैन नॉट create a new copy and return that unless it's mentioned there, right? um, so that's the document. ये आप स्लाइड से भी देख सकते हैं. इसमें एक लेट मी गिव यू हिंट, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसे फंक्शंस नहीं पढ़े जिसमें वी नो हाउ टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट. So how do we remove items from the list? The hint is by skipping over them. Again, a hint, you clear the original list using clear, and then you just repopulate. So first of all, make a copy, then clear the list, and then repopulate the list, and then you keep on skipping e's, and that's how you do it. So try this out, and let's come back and pause the video, and let's come back in 3 seconds. 3, 2, 1. Alright, so here's the solution. सबसे पहले आपने लिस्ट की कॉपी बनाई यूजिंग स्लाइसिंग, या यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं. देन वी क्लियर द लिस्ट. जब आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं लिस्ट, इट्स गोइंग टू क्लियर दिस लिस्ट, द ग्लोबल वन विच इज बीइंग पास्ड एज अ पैरामीटर. अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि कॉपी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो आपने न्यू लिस्ट, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारी ऊपर से पैरामीटर से आ रही है, उसके अंदर जस्ट अपेंड करते जाएंगे. लेकिन अगर वो आइटम ई के इक्वल है तो आप उसको स्किप कर देंगे. स्किप करने का मतलब है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी included in the final version of the list, and then it's essentially deleting it. So that's how you do it. But now let's talk about how do you actually delete an item if you want to. Instead of skipping, you can actually specify an item which you want to delete. So for example, there is a keyword called del, delete, और उसके आगे फिर आप list का जो exact item है वो specify करते हैं by using the syntax l, जो भी लिस्ट का नाम है, एंड देन द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और उसके आगे इंडेक्स. सो दिस इज गोइंग टू डिलीट एन इंडेक्स आई फ्रॉम द लिस्ट. और जब डिलीट करते हैं, इट इज गोइंग टू रिमूव इट, एंड देन इट्स गोइंग टू कॉपी एवरीथिंग टू द लेफ्ट. तो जो गैप बीच में बनेगा वो राइट साइड वाले आइटम से कवर हो जाएगा व्हेन इट कॉपीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. there isn't any going to be any gap in the final list when you remove it. So for example, here when you delete index number 1, it's going to return 1, it removes 20, and then it copies everything to the left, and then it returns that. So the output is going to be 10, 30, and 40, where 20 is deleted. A pop is another function which removes the list, and this is going to mutate. So पहले वाला जो था function, that mutates the list. It doesn't create a copy and then give you the modified copy. It mutates, it changes the list itself. This is also going to mutate the list, changes the list itself. So जब आप pop करते हैं, pop में ये जो I है, अगर आप इसको skip कर देंगे तो default is going to be the last item. So आखिरी item वो remove करेगा pop में. लेकिन अगर आप इसके अंदर index देते हैं तो उस index से जाके वो remove कर देगा item. So यहाँ पे for example, if you give a index number 1, and if your list is 10, 20, 30, 40, then it's going to remove 20, which is that index 1, and then when you try to print this list is going to print 10, 30, and 40, like without any 20. But यहाँ पे pop में और delete में फ़र्क ये है कि delete doesn't return anything. Pop removes and returns. It does two things. So you remove an item from the list, and then it returns it in this variable here. And when you print item, it gives you 20, which you just removed. So pop जो है, it's used very very commonly. अगर आप यहाँ पे इसका index skip कर देंगे, then it's basically going to remove 40, जो आखिरी item होता है -1 या length of n-1 वाला list का जो बिल्कुल आखिरी item होता है. So pop को is, if I do in this list l.append 50, and then I do l.pop, so what's the final list going to be? And the answer is going to be the same, क्योंकि हमने आखिर में append किया और आखिर से हमने remove कर दिया.
So it's not going to make any difference. Or pop जो है, it's going to return that item after removing it. Remove is the third function, method. Function कह लें आप, method कह लें आप, फिलहाल it doesn't matter. लेकिन technically this is a method. Method are functions जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक करते हैं, ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं. सो l.remove, इसके अंदर आप इंडेक्स नहीं देते, इसके अंदर आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट देते हैं जो कि हमने रिमूव करना है. सो दिस इज प्रीटी हैंडी. सो फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या है. लेट्स से आपके पास यू हैव अ स्ट्रिंग ऑफ नेम्स, आपको नहीं पता कि अली किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा अली लिख देंगे. दिस गोइंग टू रिमूव द फर्स्ट occurrence of Ali from that list. So this is how you use it. So ये तीनों के तीनों जो हैं, delete, pop और remove, they modify the list in place and they return none except for pop. Pop returns the item जो कि इसने currently remove किया. If we rewrite the above code removal के लिए, तो the way we do it is, जब तक, so basically we scan all of the list. हम देखेंगे जब तक E is in the list, we just keep on removing it. And when we are done, when E is not in the list any longer. So that's a very simple loop which removes using the remove function. Again, as a side note, this is pretty inefficient code. अगर आपने कोई efficient application लिखनी है तो this is not the way to do it. But this is one way to do it. It is correct, it works, but it's slow. अच्छा, अब ये जो दूसरा कोड है, आपको अपेरेंटली तो लग रहा है कि यहाँ पे वी आर ऑल्सो स्कैनिंग द आइटम, लाइक दिस इज अ फॉर लूप वर्जन ऑफ द प्रीवियस कोड. देखने में तो लग रहा है पहली नज़र में, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है. सो फॉर आइटम इन एल, यानी कि हम वी स्कैन ओवर ऑल आइटम्स इन दिस लिस्ट. अगर वो आइटम ई के इक्वल है जो कि हमने रिमूव करना है, तो वी रिमूव दैट, अदरवाइज वी जस्ट कीप ऑन स्किपिंग इट, राइट. अगर हम ये कोड इस पे चलाएं एंड वी डू रिमूव ऑल टूज फ्रॉम इट, तो इट आइडियली शुड प्रिंट 1. सो पॉज द वीडियो, think about it, run this code on L, maybe use Python tutor. First try to guess, and then you can run Python tutor after guessing and see what output you get. And you can pause the video and we'll resume in 3, 2, 1. So basically the output you expect is 1, but the actual output is going to be 1,2. Now that is shocking because आप तो यहाँ पे सारे के सारे 2s को यहाँ पे remove कर रहे हैं. And so where is this 2 coming from? Exactly जिस तरह कि आपको इस लेसन के शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आपको लिस्ट्स के इंटरनल्स का नहीं पता कि लिस्ट अंडर द हुड कैसे काम करती हैं, then bugs like these are going to be extremely difficult for you to fix. So this is why knowing how lists work under the hood is extremely important. Now let's dive into detail. Why didn't the previous code work? Let me shrink myself. आपको पता है कि when you're doing for loop, it's going to create an iterator. So जो item है, that's a loop variable. शुरू में it's going to be 1, then it's going to be 2, then it's going to be 3, then it's going to be at index number the fourth item, index 0, 1, 2, 3, 4. So basically items आपको 1, 2, 2, 2 देगा एक एक करके. That's the key from left to right. That's we know already. Okay, now watch what happens. शुरू में is item equals 1, is 1 equals to 2, because E is 2 here that we want to remove, which is coming in this parameter. Is it equals to 2? And the answer is no, it's not. So what do? We will not go into this if, and we will completely skip, go back to the loop. अब आपको पता है कि जो iterator है वो आपको अगला इंडेक्स देगा, राइट. सो अगला इंडेक्स क्या है? दैट इज इंडेक्स नंबर 1. अभी आपने याद रखना है, इंडेक्स नंबर 1 पे यू हैव गॉट 2. And now is 2 equals to 2? That is correct. So you remove this item, and
अब यहाँ पे अपने बहुत गौर से देखना है कि व्हेन यू रिमूव दिस आइटम, this is going to create a gap there when you remove it, and when there's a gap, it's going to fill this gap by shifting all the items from right to left, right? And then what happens is, जब इसने शिफ्ट कर लिए हैं तो आपका इंडेक्स नंबर 2 जो है वो आपके इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा, और इंडेक्स नंबर 3 इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा, और इंडेक्स नंबर 3 विल बी फ्री। अब क्योंकि आपका आइटरेटर ऑलरेडी इंडेक्स नंबर 1 पे था, विच मीन्स कि इंडेक्स नंबर 2 जब इंडेक्स नंबर 1 पे आया है, अब आपका आइटरेटर क्योंकि ऑलरेडी 1 पे था, अब उसने जंप करके जाना है नंबर 2 पे, like this, which means it completely skipped one item, and then it's going to delete this one, and this one was completely skipped, and then result is 1,2, and 1, 2 remains. Well, the expectation was only one item in the list, so that's a pretty serious bug. So how do we mitigate? Why is this even happening? वैसे मैं आपको एक heads up दे दूं. The reason it's happening is because you are iterating over a list which you are mutating. By mutating, it's not just modifying the elements, it's actually removing, adding or deleting an element. So किसी भी list को के elements अगर आप remove या delete करेंगे, उसके ऊपर अगर आप iterate करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के serious bugs देखने में मिलेंगे. And the solution is, here's another example. We want to mutate L1. हमारे पास दो लिस्ट हैं, हमने L1 में से वो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं जो कि L2 में भी हैं. You can run this code in Python tutor. You can pause this video right here and then run this code in Python tutor and see how it works. So आपके पास you have L1, you have a list. इसमें आपके पास दो आइटम्स बेसिकली कॉमन है, जो पहले दो हैं, दिस 10 और 20. बाकी जो दोनों हैं डिफरेंट है. इसका मतलब है कि आपने L1 में से ऐसे एलिमेंट्स जो कि L2 में भी हैं उनको L1 में से डिलीट करना है, which means कि you need to mutate L1. You shouldn't create a copy and return that. So when we run this function, the expectation is that it should return us 30 and 40 because क्योंकि ये दोनों कॉमन है, they should remove. Now what's exactly going to happen at the end, जिस तरह कि हमने अभी previous स्लाइड में बात की, तो उसकी रोशनी में उसको मद्देनजर रखते हुए I would highly recommend कि you pause this video right here and think about it, how this code is going to work and what is the output going to be, and then we come back. So pause the video, we come back in 3, 2, 1, and the actual output is 20, 30, 40, and the thing is कि 20 तो ऑलरेडी कॉमन था, तो फिर ये बीच में कहाँ से आ गया है. और अगर आप इसको क्लोजली देखें तो इट्स द सेम लॉजिक एज बिफोर, जो कि हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में. सो लेट्स सी हाउ दिस कोड वर्क्स अंडर द हुड. सबसे पहले आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप यहाँ पे ये वाला कोड जो है इसकी या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें साइड पे, या फिर आप इसको कागज़ पे लिख लें, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे अगली स्लाइड में. यू हैव गॉट दिस लिस्ट विच इज़ L1. L2 जो है दैट इज एसेंशली द सेम विच इज मेंशन्ड हियर. अब शुरू में जो E है दैट्स द लूप वेरिएबल, वो L2 के ऑब्जेक्ट्स को लेगा. फर्स्ट इज गोइंग टू बी 10, देन इज गोइंग टू बी 20, देन इज गोइंग टू बी 50, एंड देन इज गोइंग टू बी 60. अब शुरू में इट्स 10 is 10 in L2. Yes, it is. Here you go. So what do? You delete. अब again यह बहुत गौर से देखें. अब हमारा जो E है वो तो loop variable है. It's going to delete this at this point. That's deleted. अब यहाँ पे जो खाली जगह बनेगी वहाँ पे अब आपके बाकी एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इसका मतलब है कि सबका इंडेक्स एक एक करके डिक्रीज होगा. 20 का नया इंडेक्स हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 0. अब आपका जो लूप वेरिएबल है दैट्स ऑलरेडी एट इंडेक्स 0, विच मीन्स कि नाउ इज शिफ्टिंग लेफ्ट. सो विच मीन्स कि व्हेन यू शिफ्ट लेफ्ट, इसका इंडेक्स
उसने इंक्रीज करना है। उसको तो नहीं पता ना कि शिफ्ट होके राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, उसने तो अपना इंडेक्स बारी बारी हर आइट्रेशन में इंक्रीज करते रहना है। So that is exactly why you don't delete or add items when you're iterating over the same list. So watch what happens when सारे के सारे items right to left shift हो गए, आपका loop variable आगे चला गया, क्योंकि उसने जाना था naturally 0 के बाद 1 पे। अब ये जो item पीछे गया that is skipped, unfortunately. It didn't get deleted. So then it matches 30. It's in L2, no it's not, so it remains there. 40 is in L2, no it's not, so it remains there. And hence this 20 that creeps up in the list where it shouldn't. So the result is unfortunately 20, 30, 40. 20 बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब है, अब that's a bug. और अगर आपको अगेन अंडर द हुड नहीं पता कि काम कैसे कर रही है, तो दैट इज वेरी हार्ड टू रिमूव, एंड द एक्सपेक्टेशन इज 30-40 and it should return 30-40. So what's the solution? Again, I would recommend कि आप इस स्लाइड को यहाँ पे पॉज करें and think of a solution. Take your time and then we will come back in 3 seconds. और फिर अगली स्लाइड में आपको इसका सोल्यूशन दिखाएंगे. So 3, 2, 1. अब यहाँ पे देखें, there is a minor change. Everything is remain the same. लेकिन सिर्फ हमने एक काम किया है कि हमने उस लिस्ट की कॉपी बना ली है, और जो आपका लूप वेरिएबल दैट इज रनिंग ऑन द कॉपी नॉट द लिस्ट. अब सिंस जो कॉपी है वी आर नॉट मॉडिफाइंग इट, देयरफॉर आपके जो आइटम्स हैं वो उस कॉपी में से वी आर गेटिंग एंड वी आर चेकिंग वेदर दे आर इन L2, एंड इफ दे आर देन वी आर रिमूविंग दोज फ्रॉम ओरिजिनल L. सो दिस वर्क्स प्रीटी गुड, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि आपका आइट्रेटर इट्स आइट्रेटिंग over each item one by one. There is no skipping. There is nothing which is being copied from right to left. So कोई gap नहीं है अंदर जिसको skip कर देगा ये iterator. So that's why it works. So जब आप इसको run करेंगे, it's going to print 30-40, which is expected, and that's the right answer. So the key is again this thing here, because we are making a copy of the original list, and you are iterating over a list which you are not modifying. So by modifying I mean like adding or deleting items. वैसे modify तो आप कर सकते हैं जब आप उसके ऊपर iterate कर रहे हो, like अगर आपने 10 को 20 बनाना है index number 0 पे, you can totally do that. So yeah, that's the actual output. So पिछले वाले कोड की विजुअलाइजेशन. So यहाँ पे L1 that's a loop variable, that's an iterator. It's going to go over all items. So first of all it's going to be at 10. It's going to remove 10 इस लिस्ट में से. Then it's going to move forward 20 के ऊपर. Then it's going to remove 20 from L1. Then it's going to go to 30. It's going to check 30 in L1, and then it's going to go to 40, and then it's going to check 40 in L1, and that's how it works. There is no skipping in any way in the copy, because we are not modifying the copy. That's a copy. We are modifying, we are mutating L1 only. Alright, so essentially never add or delete. That's a big idea. Never add or delete items from a list while iterating over it. So keep that in mind always. And when you keep this in mind, hopefully आपकी जो amount of bugs हैं they will be reduced drastically. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपने एक तरफ दो कोड्स हैं यहाँ पे, राइट. एक तरफ आपने सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट स्टेटमेंट से उसकी एलियस बनाया. दिस इज नॉट अ कॉपी, दिस इज एन एलियस. सो L1 कॉपी और L1 दे आर पॉइंटिंग टू एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्ट. और जब आप L1 की कॉपी को चेंज करेंगे या L1 की कॉपी L1 को चेंज करेंगे ओरिजिनल, देन इट्स गोइंग टू चेंज द L1 कॉपी here. So this is exactly the same thing as the previous जहाँ पे बग आया था. इसको आप L1 से भी रिप्लेस कर दें, it's the same thing. क्योंकि अब आप एक ऐसी लिस्ट को मॉडिफाई करें जिसके ऊपर आप आइट्रेट भी कर रहे हैं. So that's no good. Whereas in the second code, you're making a copy. Now this object is completely different from L1. अब आप L1 को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन उससे L1 कॉपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So that's why it's going to work.
So here it looks like this. This is an alias. Alias means two or more names for the same object. L1 underscore copy is an alias of this list. So these two are both aliases. We can call them aliases. L1 and L1 copy are aliases. But in this case, these are not aliases. They are different objects under the hood. So that's why they're working. Symbol assignment does not create a copy. So yeah, assignment does not create a copy. It just creates an alias. And अगर आपने copy बनानी है, तो you have to use either slicing or a list or this copy function. So that's another very important idea. अगर आप कोई चीज़ as a parameter भेजते हैं, खासतौर पे mutable objects, so for example in this case, then your parameter is going to be acting as an alias to the object जो कि आपने parameter में भेजा है. That is important. यहाँ पे for example आप देख रहे हैं कि you have created a list and then you have passed this list as a parameter. अब this parameter is going to be L, and this L and my list, they are both aliases to the same underlying object. So when you modify the parameter, it is actually going to modify the original global list, and the output is going to be 1 2 3 5, even though कि हमने my list को explicitly कहीं पे भी modify नहीं किया. But this is what's happening under the hood. My list and L, they are aliases. So यहाँ पे lists basically can contain other lists. So these are nested lists. आप देख रहे हैं कि इस list में there are two objects, or both of these are lists themselves. So when you do nested lists, the first item, it's going to give you the first item, which is the list 1, 2. But क्योंकि अब इस चीज़ की return value nested list 1, this is a list. This is an expression. इसकी जो return value, that's going to be list. अब जो return value है उसके ऊपर आपने दोबारा से subscript operator apply कर दिया, and then you get उस list का जो return हुई है उसका index number 1, which is in this case is going to be 4. So nested list 1 is going to return this list, and then when you apply subscript operator on that list, it's going to give you 4. So आप multiple subscript operators apply कर सकते हैं अगर multiple nested lists हैं, एक list के अंदर list और उसके अंदर list, and so on. So that's the syntax basically. You can read items, but you can also modify items using the same syntax. So अगर आप यहाँ पे पहली list का दूसरा item change करना चाह रहे हैं, तो that's subscript 0 and then subscript 1 equals 20, and then that's going to replace the 2 with the 20. Right? So this thing here. This thing here. All right. Let's see how it works under the hood. So you have, and this segment of the lecture is like really important, so pay attention. सबसे पहले आपके कोड में these are the arrows जिस line पे भी हम currently हैं. So सबसे पहले you have a nested list, this thing here, which contains two lists basically. और हमने क्या किया यहाँ पे, we have just created, think about it before proceeding, pause the video. यहाँ पे हमने alias create किया या copy create किया, think about it. Alright, so basically यहाँ पे हमने alias create किया, which means कि it's the same name, it's the different name for the same object, like there, here in as mentioned. So after creating an alias, इसका मतलब है कि जब आप इसमें से किसी भी नाम को यूज करते हुए अगर आपको modifications करेंगे, तो it's just going to modify the actual underlying object. So you have to keep in mind that there is exactly one object. अभी object structure में आपको थोड़ा सा explain कर दूं कि यहाँ पे this is the parent list here. That's the parent list. A parent list के अंदर, which is this one. A parent list के अंदर there are two objects. One is this, the other one is this, right? Which is these two lists.
लेकिन अगर आप जब इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी एन एरो एंड दिस लिस्ट इज गोइंग टू बी समवेयर एल्स इन द मेमोरी एंड कनेक्टेड विद एरो एट दिस पोजीशन. सो बेसिकली यहाँ पे टेक्निकली अगर आपने इसको इस तरह सोचना है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की ना आईडीज पड़ी हुई हैं, रेफरेंसेज या आईडीज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी इसकी ऑब्जेक्ट की आईडी पड़ी हुई है, and that is basically pointing to another list in the memory. So what happens when you do L of 0, which is going to give you the first. So आप L of 0 का मतलब है कि आप हॉप करके यहाँ पे आ गए, इसने ये रिटर्न कर दिया. अब इसके ऊपर जब आपने इंडेक्स अप्लाई किया है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 1 और आपने इसको कर दिया चेंज करके 5, which is this 2, तो this 2 is going to become 5. All right, after this statement. And when you print nested, it's going to print 1, 5, and 3, 4. But watch what happens when you do L of 0. So now when you do L0, इसका मतलब है कि just go to the first 0th index, first element, और इस जगह पे अब आपने नई चीज़ रखवानी है. It can be 1, it can be a name, FCC, a string, FCC, it can be anything. अब यहाँ पे इंसिडेंटली वी आर कॉपिंग अ लिस्ट हियर. इसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू क्रिएट दिस न्यू पॉइंटर एंड देन इट्स गोइंग टू स्टोर अ लिस्ट 5, 6 ओवर देयर एट दैट लोकेशन. जो पिछली लिस्ट थी दैट्स नाउ मार्क्ड फॉर डिलीशन, इट्स गॉन. यू कैन नॉट एक्सेस इट एनी मोर अनलेस कि कोई और रेफरेंस या एलियस इसको पॉइंट कर रहा था. सो आपने L0 को चेंज किया, लेकिन जब आप नेस्टेड को प्रिंट करेंगे तो it's going to print the same thing जो कि final modified object. So this is what the nested list object looks under the hood. Now what's the solution? अब जारी बात है, we cannot do this, right? This is just creating alias. So what if we need to copy, create a copy of nested? How do we do that? This is, not as easy as it sounds, because पिछली दफ़ा तो हमने देखा था ना कि you just create a copy using copy or slicing or anything or list, and then it's going to create a copy. But let's see what happens if we try to do that in this case, because we are nested, remember. और underlying structure जो है ये भी अपने याद रखना है इसका. So let's say you have a nested list. उसका जो structure है that looks something like this, which we talked about in the previous slide. And then in line number 2, you create a copy, और copy आप मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं, the slicing or the list function. अब जब आपने copy की line number 2 में, it's going to create a new copy of this list. इसके अंदर जो contents होंगे, incidentally इसके अंदर अब उन objects की IDs हैं, वो सारी एक नया structure बन जाएगा यहाँ पे, जिसका मतलब है कि this is going to be a different list, this is going to be a different list, and nested is pointing to a different object, L is pointing to a different object. लेकिन since they are nested, तो इनके जो items हैं they are pointing to the previous objects जिनकी IDs भी copy हुई हैं साथ. अब इससे होगा क्या? So now when you do L of 0, so L of 0, आप L पे गए, इसका 0th item is this, is going to give you the object at the 0th position. And when you change the first item in that to something else, not 5, it should be something else. So then, let's say it was 2. तो then जब आप nested को print करेंगे, it's still going to print the modified version, because it's now, because आपके objects जो हैं वो तो same है, वो तो change नहीं हुए, उनके references दोनों जगह पे same है, L में भी और nested में भी, उनके सिर्फ content change हुए हैं. अब क्योंकि दोनों एक चीज़ को point कर रहे हैं, आपने एक रास्ते से एक को change किया, let's say आपने L से change किया कोई, that change is reflected in the nested path also. Now what happens when you do L0 and you replace it with something else? अब पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि nested और L दोनों चेंज हुए थे, लेकिन इस केस में सिर्फ L वाली कॉपी ही चेंज हुई है और उसके अंदर एक नई लिस्ट बन गई है. So when you try to print L, it's going to print 5, 6 and then 3, 4. When you print nested, it's going to print
1 2 and then 3 4. So that's a major difference in this case. So this is something called a shallow copy. Shallow copy का मतलब है कि you are just copying the top level list and you are not creating a copy of all of the nested objects. So nested objects की जब हम copy ना बनाएं तो फिर there is something similar to this thing here which can occur, और उसमें फिर the bug is when you change one thing the other also changes. So again अगर आप L01 को 7 कर देंगे change, so this is not going to change the nested variable. This is still going to remain 1 2. So यहाँ पे हो जाएगा it's going to be 5 7 not 5 6, and that's completely independent of nested. लेकिन अगर आप L11 को change करेंगे क्योंकि अब ये share कर रहे हैं object, then it's going to change nested. So pause the video, think about it, what's the solution going to be, can be, and how to implement a completely independent copy of both if they have nested structures. So shallow copy के अंदर we use either copy or slicing or list, and this just creates an outer, the outer top level list की copy बनाता है. अंदर जो आपके references stored हैं objects के वो सारे वही होते हैं, और जो they are basically aliases inner list जो हैं. Deep copy के अंदर you completely create a independent copy and you use this deep copy function. So here is an example of a deep copy. A deep copy is available in the copy module. You have a nested list called nested, and which has this structure. Or instead of just simple copying, you do copy.deep copy and you provide a nested list with the nested structure. Then what it's going to do is it's going to create a completely independent copy. अगर आप एक को जाके change कर भी रहे हैं तो it's going to completely leave the other alone, और सिर्फ जिसको change कर रहे हैं उसी के अंदर ही reflections होंगी changes की mutation, otherwise दूसरी is independent. अगर आप visually इसको देखें तो visually it looks something like this. So सबसे पहले आपने nested बनाई, उसका जो internal structure है it looks like this. लेकिन line number 2 में when you're doing a deep copy of it, so that is going to create another completely independent copy of L. So that is not an alias to nested, that is a completely different copy with the different top level list and also all of the nested list or nested mutable objects. And when you change one, it's going to be completely independent of the other. So for example, आप ये देखें line number 3 में change किया है, लेकिन line number nested का जो second element है, that's completely fine. So moral of the story is that you have to keep these things in mind, and you have to use a deep copy when there are nested structures involved. Again, remember कि nested जब structures हैं आपके पास, the deep copy is not a very efficient method, so use it sparingly जब आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े data है, for example. And we are at the end of our session here. So this is the summary of lists. हमने किया append, which adds at the end of the list. Extend basically आपकी दो list को merge करता है और it mutates the list. Plus दो list को merge करता है but it doesn't mutate the list, it creates a copy. Insert ith जगह पे जाके insert कर देगा आपका ith index पे आपका element. Remove जो है वो it works by elements not by indices. Pop it works by indices not elements. So अगर आप I को remove कर दें, यहाँ पे कुछ भी ना डालें, खाली parenthesis छोड़ दें, it's going to remove the last one. The default is the last, and the clear, it's going to clear the entire list. All of these are pretty much they mutate the original list. Pop is the one which removes and also returns a value. Summary अगर आप पूछें तो easy अल्फाज में summary है कि be very careful when you're iterating over a list that you are adding items or removing items from. अगर आपने ऐसी list को iterate करना है जिसमें से आप items को या तो add करें या remove करें, तो always make a copy first, और उस copy के ऊपर आप iterate करें. And
एलियसिंग क्या होती है और एक्चुअल कॉपी क्या है उसके बारे में डिफरेंसेस, और शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है, इसके बारे में डिफरेंसेस हमने देखे। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल हैं, जिसकी वजह से मसले पड़ रहे हैं सारे। बल्कि ना सिर्फ लिस्ट, अगर कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो जिस तरह डिक्शनरीज हैं, अगर वो भी हम यहाँ पे यूज़ करें, देन वी हैव टू डू अ प्रॉपर डीप कॉपी, नॉट जस्ट a shallow copy. Yeah, even assignment which is going to create just an alias. So yeah, that was all for today, and see you next time. Thanks. Bye.